سبمٹ کروں گا کہ وائی نوٹس واز ناٹ ایشوڈ ٹو دی ایکیوزڈ. Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it to the case where the complaint regarding the same incident. दूसरी में क्या इशू था? हाँ, वो था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट को वो नहीं कंट्रोल कर सकता, दिस शुड बी परमानेंट चीफ जस्टिस. मगर वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं. ये इस रेफरेंस से ये ट्रांसफर के, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ. मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैरा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ. जी पढ़िए, पेज बताइए. जी पेज 43 सर, पार्ट मिलॉट पार्ट 9. वो एक से इधर आ रहा है पार्ट को आ रहा है. बड़ा स्कैटर्ड हुआ है सर, कोई उधर ऑर्डर है, कोई जब तक पढ़ते हैं वो बाकी जनाब. नहीं वो आप पढ़ेंगे तो हम सुन लेंगे, ना भी आए. ये सबके पास है. जी जी प्लीज स्टार्ट. सबके पास नहीं पढ़ते तो अब सुनते रहते हैं ना जब तक आ जाएगी. I have no objection sir. आप सही पढ़ेंगे. I will obey every command of. नहीं जी प्लीज. Sir, the next challenge is to the oath subscribed to by the acting Chief Justice at the time of assumption of his office. The only objection is that the acting Chief Justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court Judge's Oath of Office Order 1977 within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court by virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77. All the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PC. But there was no. But probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. नहीं वो पता नहीं अब क्या कहते हैं. मुझे तो उनका यही समझ आया कि वो कहते हैं कि हमने ओथ ना लिया तो जज ही कोई नहीं, कोर्ट ही कोई ना. बड़ी बात है वैसे. बहरहाल एनीवेज, अब दूसरा दिखाओ. दूसरा पेज 55. नहीं मगर मेरिट्स पे बताएं. मैं उसी पे आ रहा हूँ सर. ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया. आपने कहा था कि वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है. इट्स अ गुड हिस्ट्री लेसन. बहुत अच्छा. इफ नथिंग एल्स. मलिक साहब ये बताएं कि ये हाई कोर्ट ने कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की और किस केस में? इसी में ट्रांसफर में सर 526. अभी तो मैं पढ़ना है उसको अभी, क्योंकि मैं वो आई एम ओबेइंग द डायरेक्शन, वो मैं उसको पढ़ूंगा. साथ ही फिर ये भी बता दें बाद में क्वेश्चन करने से, स्टेट मस्ट बी थ्रू समबडी. स्टेट का मतलब सर यही होता है कि जैसे हम बेल पिटिशन फाइल करते हैं ना, हम अपील फाइल करते हैं, somebody is convicted, so that is ABC versus state. नहीं वो नहीं, वो लिखें ना लिखें, that इतना है बात जगहों पे शायद है ऐसा, बट वो स्टेट का मतलब ही यही है कि वो प्रोसिक्यूशन है, वो कोई इतना सीरियस बात नहीं. अब मैं 35 दो. नहीं अब आप मेरिट वाली बात बताएं. वो मेरिट वाली बात कैसे डील कर रहे हैं? चलना मेरिट पे. अब इसमें सर प्राइवेट कंप्लेंट का भी जिक्र आ जाएगा, नोटिस क्यों नहीं हुआ वो भी आ जाएगा, ताकि दोनों चीजें जो आपने पूछी हैं वो क्लियर हो जाएंगी. सर पेज 55 सर. पार्ट 9 के 31 ये पार्ट है जी 9 जी 55 पेज पे. जी 55 पेज पे पैरा सर इसका है 31 जी. एक कंप्लेंट टिश्यू देना. एक कंप्लेंट अगेंस्ट 55 against
Mr. Z. Bhutto and 19 other accused persons under section 120B 119. skip this. हाँ जी. सर ये बड़ा जरूरी है सर. अच्छा. ये थोड़ा प्लीज इसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. मैंने तो पढ़ लिया जी. कुछ खास बातें तो बताएं. सर अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूँ तो फिर बता दूँ तो ज्यादा. बताइए. सुन ले सर, कुछ नहीं होता सर, बड़ा जरूरी है. आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ ट्राइंग टू get things completed also. ये बस नहीं हो जाएगा सर. देखिए वो उससे बेहतर है कि वो, अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कहूँगा कि अगर जल्दी में कुछ चीज़ रह गई तो फिर वो सारी जिंदगी का मसला है. जैसे तो आप इसको सुन लें, मैं तैयार हूँ. आप रात 12 बजे तक मुझे रखें, मैं तैयार हूँ. अच्छा. मैं 12 बजे तक भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं. एक कंप्लेंट सर मैं पढ़ा था अंडर सेक्शन में स्किप कर देता हूँ. वाज फाइल्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट एट लाहौर बाय मिस्टर इफ्तिखार अहमद तारी द कंप्लेनेंट अगेंस्ट एप्लीकेंट सो एंड सो. अब मैं इसमें वो आ जाता हूँ जो कंप्लेंट इन्होंने की है. मियां अहमद तारी ये कौन आ गया? ये कुछ दूसरे थे जी. ये बेटा ये है द कंप्लेंट ऑफ अहमद रजा कसूरी पैरा 32 जी. बड़ा करना was referred to a division bench consisting of Mr. K.M. Samdani J and Mazrul Haq J. अब यहाँ मैं पॉज करूँगा और मैं सबमिट करूँगा कि why notice was not issued to the accused. Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it to the case where the complaint regarding the same incident is pending. So that was avoided. Because those two honorable judges, I believe the acting Chief Justice was not inclined to include them in the bench. So that is, अब इसको आप क्या कहेंगे? बायस कहेंगे, टैक्ट कहेंगे, क्लेवरनेस कहेंगे. आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा. अब आप इसको हम नहीं कुछ कहते हैं. आप सो मैं कहता हूँ दिस इज ए क्लेवर मूव. जी सर, ठीक. ये क्लेवर चीज है ना जी. ये बायस से आगे बात है. बायस तो एक चीज है ना कि आपका एक वैक्ट है, कुछ स्किप कर गए. ये तो आप किस तरह कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस है. वायलेशन भी नहीं है. वायलेशन तो बड़ी चीजें होती हैं कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे नहीं मिली, मुझे ये होना चाहिए था, नहीं हुआ. ये वायलेशन नहीं है कि एक goes to the root of a fair trial. हाँ बिल्कुल. ये आपने एक क्लेवर लिया. बिकॉज आई कैन नाउ रीड द माइंड ऑफ द जज एज वेल कि वो अगर नोटिस किया गया, सो ऑब्वियसली द अक्यूज साइड विल आर्ग्यू कि सर द प्राइवेट कंप्लेंट इज पेंडिंग बिफोर ए 2-member bench, refer this 2-member bench. And in that 2-member bench, one has already allowed bail to Mr. Zulfikar Ali Bhutto. वो कंप्लेंट क्यों 2-member bench के पास अब पता नहीं जी वो उस वक्त चली गई होगी, पता नहीं चला होगा. यहाँ कोई बात अभी तक सही नहीं हुई होगी. मैं उस पर कुछ तबसरा नहीं करता. मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो फैक्ट है. उसमें एक जज ने बेल दे दी ना. नहीं, ये कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाती, वहीं थी ना जी पेंडिंग. ये तो हाई कोर्ट के सर वो ट्रांसफर होगी ना. नो, अभी ट्रांसफर नहीं हुई. नहीं सर हो गई है. आप ऐसा करिए कि 56 पेज के ऊपर से चौथी लाइन पढ़िए, अभी क्लियर हो जाएगा कि वो कंप्लेंट जो अहमद कसूरी इन्होंने दायर की थी वो कहाँ गई. ये पढ़े. सिमिलरली एक कंप्लेंट, हाँ वही है. हाँ ये पढ़े यहाँ से. हाँ मैं सर वो जल्दी में आता हूँ ना तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है. कंप्लेंट के अभी क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है आपने. मैंने सारा पढ़ना था, मुझे डायरेक्शन आ जाती है. हाँ पढ़े. सिमिलरली ये सर चौथी लाइन पैरा 56 से. सिमिलरली ए कंप्लेंट केस फाइल्ड बाय अहमद रजा कसूरी इन रिगार्ड टू द मर्डर ऑफ हिज फादर नवाब मोहम्मद अहमद खान वाज ट्रांसफर्ड दिस कोर्ट by order dated 15th of August 1977. पहले ही हो गई थी. ये पहले, ये तो मैं कह रहा हूँ कंप्लेंट पहले ट्रांसफर हो चुकी है ना. इसीलिए जो मैंने जो आर्गुमेंट जनाब को दिया कि मूव क्या थी, करना क्या था, क्योंकि उस 2-member bench में से one honorable judge Justice Samdani allowed bail to Zulfikar Ali Bhutto in the state case. आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहला उनका मूव ये था कि हम ये कंप्लेंट आए मैजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट आ जाए. आ गई.
ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनको बेल मिल गई. जब बेल मिल गई दे सेड ओके लेट्स ट्राई अनदर थिंग. उनने फिर एक और मूव किया और उनने जो मेन केस था उसको ट्रांसफर किया नोटिस के बगैर. ठीक समझ आ गई ना जी बात, वेरी क्लियर. और ये भी बता दें क्या मैजिस्ट्रेट से वहाँ हाई कोर्ट ट्रांसफर हो सकता था? ये भी आपने अब ये बिल्कुल हो सकता है सर. अब उसमें लेकिन एक बात और क्लियर भी हो गई ना जी सर कि एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट के नोटिस में था कि एक कंप्लेंट यहाँ पड़ी है और नूरलाई केस के तहत उसको साथ चलना चाहिए. नहीं मगर सर वो तो देखे ना, अब मैजिस्ट्रेट तो ये ऑर्डर नहीं कर सकता ना कि इसको ट्रांसफर कर दें. हाई कोर्ट के पास नहीं, हाई कोर्ट के पास है ना जी. मगर वो दूसरा चालान जब आया मैजिस्ट्रेट के पास, उसके पास तो ही हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू सेंड इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन. वो तो अंडर द लॉ ही कैन नॉट लुक एट दिस कंप्लेंट. अब माय लॉर्ड जस्टिस यह्या हैज वेरी एप्टली समराइज्ड द सिचुएशन. Yes. And I think he's fully understood what was the move, though it was clever move. What was the intention? No, since your lordship is looking for malice, Yes. for touching the merits of the case, so step by step your lordship will feel that malice is not clear, but it is floating on the surface of the record. In every respect. ट्रांसफर हुई थी विदाउट नोटिस, कंप्लेंट भी विदाउट नोटिस. कंप्लेंट तो सर कंप्लेंट में तो क्योंकि कंप्लेंट में उस वक्त तक एक्यूज हैज नॉट बीन समन्ड, उसमें तो वो अभी 202 की इंक्वायरी नहीं हुई ना, तो वो तो था ही कोई नहीं. वो हो गई अगस्त में ट्रांसफर हो गई. उसमें मेन कॉग्निजेंस लेने से पहले ट्रांसफर हो गई जी. कॉग्निजेंस तो नहीं ली ना जी उन्होंने, तो अभी कुछ भी नहीं किया. मगर वो अब उसको अगर आप इंटरप्रेट करेंगे 526 को अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें तो और बहुत बातें करनी है. इस पॉइंट पे बहुत आर्गुमेंट्स हैं. ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता. फर्स्ट स्टेप में तो मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज को भिजवाना था, वहां से फिर हाई कोर्ट जाना था स्टेप. हाँ जी, तो अभी उसी के पास थी ना वो कंप्लेंट. उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. बहरहाल ये रिकॉर्ड यही कह रहा है इंक्वायरी के बाद फिर आगे कहानी होगी. वो कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है कसूरी साहब वाली. वो मैंने लेटर भी लिखा था आपके ऑफिस को, उन्होंने मुझे कुछ 10 कॉपियां भेज दी, सारी एक एक सफ़ा देखा. वो कोई तारी साहब की कंप्लेंट है, कोई किसी और की कंप्लेंट है. जो कसूरी साहब ने फाइल की थी वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और उस कंप्लेंट पे हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर हुए वो भी रिकॉर्ड पे. अब तो मेरे पास जो कुछ है मैं तो आपको उससे भी असिस्ट कर रहा हूँ कि जनाब ये स्टेट ऑफ अफेयर है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक स्टेप ज़रूरी है, एक एक स्टेप ज़रूरी है. अगर जनाब चाहते हैं कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए तो ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ों को देखा जाए. सर अब मैं पढ़ूँ सर. By the order of so and so, another complaint, Sayyid Zafar Hussain Shah versus Zulfikar Ali Bhutto, ये भी कोई और है, इसको मैं छोड़ देता हूँ. The complaint of Ahmed Raza Kasuri was referred to a division bench during the pendency of this complaint. Now this is relevant, sir. Para 33. The police filed an incomplete challan before a magistrate on 11th of September. ये 12th को है, उन्होंने 11th लिख दिया. The magistrate acting under section 193 of Code of Criminal Procedure, हालांकि एक्ट उसने 190 में किया, ये जज साहब ने 193 लिख दिया. The same day to the court of session, the state filed an application for transfer of this case to the original site of the High Court, which came up for hearing on the morning of 13th of September 1977. The acting Chief Justice passed an order of transfer and constituted a larger bench of 5 judges for hearing the matter, obviously on the same ground on which number of other cases against Mr. Bhutto and other has been transferred. अब वो कौन सी ground है? We don't know. Nothing is on the record. उन्होंने कहा कि वो भी हुए थे तो ये भी कर दी. अब जनाब इसका 34 का मैं पढ़ूंगा, क्या पूरा तो मैं नहीं पढ़ा, मैं ऊपर से 7-8 लाइनें छोड़ के नीचे जहाँ पे 10:30 AM लिखा है ना जी, एक लाइन में 10:30 AM, मैं इससे आगे पढ़ूंगा. There is nothing singular or strange in the order of transfer which was considered expedient in the interest of justice, as Mr. Bhutto, who had held some highest office in the country, was an accused.
In view of the importance of trial, the constitution of a larger bench of 5 judges was considered necessary. The constitution of such a bench should inspire more confidence. अब ये मुल्ज़म को भी ये एडवाइस दी जा रही है कि 5 जजों पे इत्माद ज़्यादा करो. To the more confidence rather than create an apprehension in the mind of any property. The apprehension of the petitioner's partiality and prejudice of acting Chief Justice on this ground is not at all reasonable. And another ground, ये कहाँ है वो जो ट्रांसफर हो गया, वो पढ़ देना. हाँ ये सर, अब मैं सर बाकी अभी स्किप कर रहा हूँ. पेज 63 जिसमें ये ट्रांसफर के बारे में बात आ रही है. पेज 63 सर, पैरा 42. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा पेनफुल है, बड़ा पेनफुल है पर्सनली फॉर मी सर. An other ground is that the order of transfer has been passed without notice to the accused petitioner. No such notice was required in the present case. अब आप ये बता दें, मैं नहीं, I can't comprehend sir, कि 5 judges of the High Court headed by the Chief Justice, who by that time was judge for the last 15 years, they are writing no notice was required. और इससे painful बात अगली है. Under section 526(6) provide for a notice to the public prosecutor on the application of accused person for transfer of a criminal case. अब जनाब यहाँ पे मैं जरा 526 का 6 पढ़ दूंगा ताकि जनाब को पता चले फिर कि क्या हुआ है. जनाब आप वो जो कर रहे हैं ना कि मूव, क्या मूव है, अब यहाँ से क्लियर होती है. ये जनाब 526 subsection 6 सर, पढ़ूं सर जी. Notice to public prosecutor of application under this section. Every accused person making any such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between giving of notice and hearing of application. इस नोटिस को उन्होंने बना दिया. अब जरा देखें, अब इसको जनाब क्या कहेंगे? Ignorance. If it is ignorance of all the 5 judges. No, नहीं, क्या कह रहे हैं कि नोटिस सिर्फ प्रोसिक्यूटर को होगा. प्रोसिक्यूटर को नोटिस है एक्यूज की तरफ से. जिस तरह जनाब की कोर्ट में है कि जब आप चैलेंज करते हैं तो वो एक कॉपी भेजते हैं ना. अब इससे बड़ी, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट बदयांती क्या होगी? What is mentioned if the state applies for the transfer? If the state applies for yes, वो कहते हैं जरूरत नहीं है. क्यों? नोटिस तो ये तो कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो एक्यूज से रिलेटेड है कि अगर वो करेगा तो वो नोटिस देगा. वो कहते हैं क्योंकि स्टेट को नोटिस होना जरूरी है, एक्यूज को नोटिस की. मलिक साहब ये तो आप इस पे आ गए ना, मगर ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर जो हैं वो कहाँ है? वो 526 में दिए गए 1 2 3 4 5. सर मैं आऊंगा, तो उनका तो तस्करा है ही मैं नहीं. आऊंगा, मैं तो आपको देखे, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ये जो चीज है ये टाइम कंज्यूमिंग है बट जरूरी बड़ी है. ये स्टेप बाय स्टेप, वेदर फॉर दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और नॉट, बट good history lesson. Yes sir, बिल्कुल and है. for students of law. बिल्कुल है. मैं कहता as हूँ well as for judges. मैं कहता हूँ कि इसको कंपल्सरी कर दिए. I taught this case at slums for 4 months. For 4 months. मैं तो कहता हूँ इसको कंपल्सरी कर दें कि ये जो भी क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहता है या जिसको भी आप एलिवेट करें वो ये केस पढ़ के आए. वैसे मैं ये सवाल पूछता था अक्सर, वो जब मैं ASCs को एनरोल कर रहा था, तो खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस करते हैं कि आपने जजमेंट पढ़ा है ये वाला, और शायद ही किसी ने पढ़ा होता था. नहीं वो किसी सर केस को एक और मैं रिक्वेस्ट करूं यहाँ पे
केस अगर आपने क्रिमिनल केस को समझना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज से आप जजमेंट से कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन। आप रिकॉर्ड देखें, आप एविडेंस देखें, वहां से समझ आती है। अब ये अगर इंटरप्रिटेशन है कि वो कहते हैं कि अगर ये इंटरप्रिटेशन मान ली जाए, अब मैं आ गया जी, आगे बढ़ें सर आगे। सब सेक्शन 3 of section 526 read with clause E of section 526(1) authorize the High Court to transfer to it a case either on the application of a party or on its own initiative whenever it is expedient in the interest of justice. These provisions authorize the High Court pass an order without notice. अब इसका क्या करें? मगर ये सब कहने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ट्रांसफर तो केस ऑलरेडी हो चुका है। वो कहने की जरूरत इसलिए थी कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई। वो तो एप्लीकेशन 22 पे आ रही है। नहीं, इस पे आ रही है ना जी, ये 2 दरखास्तें हैं, मैंने पढ़ी पहले आपको, उसमें ये स्पेसिफिक ग्राउंड है की जानिब से। नहीं सर नहीं, मैं थोड़ा सा केस ट्रांसफर हो गया, उसने एतराज किया without notice to the accused, not 1 but 5 accused. At that time there were 7 accused. Then when it was in the High Court, when this was in the High Court, an application was filed in the High Court. नहीं, मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ। वो जो ऑर्डर आपने जो सबसे पहले पढ़ा था, जरा उस ऑर्डर पे वापस आइए एक सेकंड के लिए। एक नंबर पेज पे जी, वो एक नंबर पे जी फरमाइए सर, मैं मेरे जुबानी याद है, आप पूछिए। इज ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट, यस, जरा सा मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। इज ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट फॉर ट्रायल। नाउ द सेम बेंच इज हियरिंग दैट इट हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड। एक ये पॉइंट है, वो जो एप्लीकेशन में जो थ्रस्ट ऑफ द मैटर है ऑन द प्रेजुडिस और बायस ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये तो ऑर्डर हो चुका है सर। इसी तो फिर ये वो इतना लंबा ऑर्डर, अब वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अब वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अनलेस आई एम रॉन्ग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 100% ठीक है आप। हुआ ये कि टेंटेटिव ऑर्डर नहीं है, ये देखें सब्जेक्ट टू नोटिस लिखा है, इज ट्रांसफर टू दिस कोर्ट फॉर ट्रायल, full stop, खत्म हो गई। नहीं, that was a short order. It says for short order we giving reasons now. Page 35 पे देखिए ना। सर नहीं, वो दूसरा है। देखिए मंजूर मलिक साहब, go back to page 2. Page 35 says so. नहीं सर नहीं, I'm talking about the order on page 2 in view of the submissions made by volume। ये तो conclusive order आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सर मैं आज करता हूँ। Then he turns it around, says for the short order passed earlier. It's not a short. No, he's saying that. From where you are reading, sir? Sir, page 35 वॉल्यूम पार्ट 9 जरा देखिए ना, उन्हीं एप्लीकेशंस पे फिर ऑर्डर आ रहा है ना। नहीं, ये वो एप्लीकेशन नहीं है सर, वो एप्लीकेशन है 127T of which have already been dismissed by ये short order। वो तो और है ना, यही CM है ना, पहले dismiss, यही CM है, नीचे इनका short order के नीचे ऑर्डर। मैं शायद अपनी वजाहत नहीं कर सका। मैं अगर आपको पेज नंबर 2 पे हम जाएं वापस, जो है in view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial, full stop, concluded matter. Now in the subsequent order they're justifying this order, वो इसलिए justify कर रहे हैं, मैं which was strange। सर वो इसलिए कर रहे हैं कि जो accused की तरफ से ये जो मिसलिनियस एप्लीकेशन लिखी है ये भुट्टो साहब ने, ये डिफरेंट है, कवर कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? उसको डिसमिस किया दोनों एप्लीकेशन को शॉर्ट नहीं, मेरा मतलब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन अपील इट शुड हैव बीन बिफोर सम अदर बेंच। फिर ठीक है, क्योंकि ये खुद ही फिर उसको रीजनिंग दे रहे हैं। सर वो इसलिए कर रहे हैं ना कि भुट्टो साहब prayer was that this court shall not hear this matter. He was alleging bias, and for alleging bias this was one of the ground of bias. But against one judge was
obviously sir, मगर उन्होंने उसको जस्टिफाई करने में बहुत सी चीजें कर दी। सर वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो तो फिर जब एक आप चीफ जस्टिस को करेंगे तो बाकी तो शामिल हो ही जाएंगे ना, वो तो सारे शामिल हो जाएंगे उसमें। वो मैं जो बात कर रहा हूँ, आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं इधर? ये तो मुहावरा है जी, जो समझना चाहे मुझे मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जिसने मुहावरा हमारी अदालत बड़ी डेमोक्रेटिक है, हर जज अपने डिसेंट भी करते हैं, आप नोट कर रहे होंगे। ये तो बड़ा हेल्दी साइन है ना जी, डिसेंट करना का मतलब है कि यू आर अलाइव, आप एक जो जिंदा है वो ही डिसेंट करेगा ना। जो डिसेंट करते हैं वो हाथी के पाँव से निकल जाता है, जो डिसेंट करते हैं वो हाथी के पाँव से निकल जाता है। अब आप मैं नहीं ज्यादा लिबर्टी नहीं लेना चाहता। अच्छा सर, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक एट दिस पॉइंट? कर ले जी, कर ले। नहीं, क्योंकि आप काफी देर से खड़े हुए हैं। सर मेरे नहीं हमें है फिक्र, कोई कर लेते सर, आप बता। मेरा ख्याल है इस पॉइंट को खत्म कर लें, ये जो ट्रांसफर वाला, चले ये इसको खत्म, चले बिल्कुल इसको खत्म कर, बिल्कुल ठीक। आई एम विद यू सर, आई एम विद यू। ये खत्म कर लें। नो सर, नाउ आई विल लाइक टू रीड सेक्शन 526. This is the point. I hope I am clear on the change of investigation, re-investigation, transfer of the case, no notice to the accused, no notice to anybody, then justification that notice is not required. So I am clear. Now sir, as your lordship has rightly observed that this provision has not authorized the High Court to transfer any case without any justification. There must be some reason. There are grounds which have been mentioned in this section. Okay, under such and such ground, a case can be transferred to the High Court. And those grounds are question of law of unusual difficulty, general convenience of the party, such order is expedient in the end of justice. आपने पहला वाला छोड़ दिया, वो भी सब कर ले, उसको भी शामिल कर ले। मैं जिस पॉइंट पे जल्दी fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court. ये बिल्कुल ठीक है सर, वो आप काफी चीजें उसमें, अगर ये लिखना तो चाहिए जजेस को। सर मैं तो कहता हूँ लिखना चाहिए नहीं, ये तो this is the mockery of law if you pass an order just by saying in view of the submission made in the application it is transferred, and that too by a 5-member bench headed by the Chief Justice, and in a case where death sentence is provided. So but anyway, this is the reality you people are facing now. This is the reason why people say this is a judicial murder. This is the reason. These are the grounds. अब जनाब इसका मैं पढ़ूंगा सब सेक्शन 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है. When the High Court withdraws for trial before itself any case from any court, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case has not been withdrawn. It's a very important, sir. Ab, your lordship have noted that High Court has power to transfer a case from magistrate to the court of session, from the court of session to another court of session, but this provision is not for that court. This is for the High Court. If High Court withdraws a case from any court to it, it will follow the same procedure which is prescribed by that court. Court of session का procedure. Session या magistrate का. अगर आपने magistrate से किया है, so you will follow the procedure of the magistrate. This is very important. Now I will draw your attention, your lordship, to section 374. Kindly see. What is 374? यही जो है कि confirm कौन करेगा death penalty. नहीं सर, मैं अब आता हूँ, बड़ा ही it is a novel point. High Court 5-member bench उसको death penalty दे रही है, तो confirmation क्या Supreme Court में 374, 376. सर मैं सर इजाजत दें मुझे. Section 374 Code of Criminal Procedure, इसका कैप्शन है सर, sentence of death to be submitted by the court of session when the court of session
passes sentence of death, the proceedings shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. आगे सर वो procedure सारा दिया, वो क्या करेगी High Court? अब now this provision is part of procedure of Court of Session. Your Lordship has gone through many judgments. Every judgment of the session judge or additional session judge, at the end it is mentioned that reference is being sent to the High Court under the provision of so and so. This is part of procedure. So the question arises, if this case, a case where sentence is death is provided, is transferred to the High Court, where this provision will go. Then the number of questions, related questions arise. One, firstly, yes, sir. Are you saying that under 526, no murder trial can take place? That could be number one. No murder trial can be transferred to the High Court. Ek second, let me just finish. One interpretation could be, because if you read the two sections together, since confirmation is required and there is a possibility of a capital punishment being given, therefore High Court should never transfer to itself a murder case. That could be one interpretation. The second interpretation could be, no, you can still transfer it, but then the High Court is not actually acting as a High Court, but it is actually acting as a Sessions Court, and then the matter will have to go to another bench of the High Court, exercising powers under the High Court. Very right, very right. I mean, I don't know. Or since the third one could be, since this has been done under the 526, this is a redundant provision. These, I think, are only three scenarios. Very precisely. अब आपका, what is your answer? मेरे दोनों ही हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि इसको करेक्ट करने के लिए, it is not a transfer of the trial, it is withdrawal of the trial. Same ठीक है जी. No, transfer is something else. नहीं सर नहीं, एक वो पढ़े ना जी. इसको आप अटेंड कर लें पहले. देखिए ना, विड्रॉल है, एक मामला एक कोर्ट में पेंडिंग है, आपने अपने पास ले लिया, वो किसी की एप्लीकेशन पे लिया या ऑन योर ओन इनिशिएटिव, वो एक ही चीज है. विड्रॉल और ट्रांसफर मतलब ये है कि हाई कोर्ट में जाग चला गया ना जी. अब ये अग्रीड के प्रोसीजर ख्याल में अभी चौथा सिनारियो वो लार्जर बेंच का है. आप हमें ये जरा मैं करता हूँ, मैं जरा यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. जी सर, आप प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर तो वही रहेगा ना. सेशन ट्रायल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि सेक्शन 374 इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, एंड देन देयर इज अ वेरी गुड जजमेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन, ऑथर बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह. Thank you, sir. I'm just reading that. You're only concerned today with Shah Sahab. This is PLD 2021. नहीं, पहले ये आप हमें बताएं ना. क्या सर, ये सुनने में बताता हूँ वो बात. आपकी बात मैंने नोट कर ली है, मैं उसका जवाब देता हूँ, मगर ये थोड़ा सा जो PLD सर 2021 सुप्रीम कोर्ट 600 यही है. अब इसका पैरा 6 है जी, फिर 7, 8 दे आर रेलेवेंट. आपका जजमेंट है? नहीं, मेरा नहीं, शाह साहब का है. शाह साहब इज द ऑथर जज सर. आप सिग्नेटरी थे इसमें? हाँ, ये बात ये सही है, बट आई डिड नॉट ऑथर. Which paragraph? सर पैरा 6 है, अगर कहते मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा. नहीं, सिर्फ बता दें क्या पॉइंट. पैरा 6 है, ये इन्होंने कहा कि ये एक ड्यूटी है, ये और ये ड्यूटी उससे बड़ी है. अपील जो है वो राइट है. This is the duty. And from my personal experience as a judge of the High Court, sir, I decided 2 murder references where there was no appeal. No, kindly look at the wisdom. There was no appeal. 2 cases. I decided as the judge of the High Court with perhaps my Lord Justice Tarak was with me or somebody else, I don't remember. But in both these cases, both the accused were acquitted. Both the accused. So this is the duty, that is a right. And it is clearly mentioned that if this reference has been sent, that sentence cannot be executed unless references. There is no bar if no appeal has been filed.
अपील के लिए नहीं है, ये रेफरेंस के लिए. नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट कि फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, माय इंटरप्रिटेशन दैट इफ वी रीड दीज टू प्रोविजन टुगेदर, सो आई विल सबमिट that this a case where death sentence is provided cannot be transferred to the High Court because of 374, because otherwise it will become redundant. अगर उसको provision तो apply नहीं हो गया ना. वो कौन सी सर? हाँ वो भी है, एक वो भी पॉसिबल. सर आप 5 मेंबर बेंच सुन रहा है तो उसका 10 मेंबर बेंच रेफरेंस 9 मेंबर के पास दाखिल हो जाता है ना. ये एक रिलेटेड क्वेश्चन इन पाकिस्तान जुडिशियल हिस्ट्री. Has a murder trial ever been conducted by the High Court? बिल्कुल बिल्कुल सर. इसमें Murder trial. मैं यही अर्ज करने लगा. जो हमने रिसर्च किया, मैंने नहीं की, क्रेडिट गोज टू दीज टू यंग बैरिस्टर्स. इंडियन जुरिस्डिक्शन में एक भी केस नहीं है. ठीक है, हाँ छोड़ो, इंडियन जुरिस्डिक्शन में नहीं है, एक भी केस नहीं है सिंस 47 टिल 1970. हमने 77 तक देखा ताकि वो पीरियड रहा. पाकिस्तान में 2 केसेस हैं. दो. एक केस है कराची का, दैट वाज अगेंस्ट गोहर अयूब, son of former President Ayub. Some private complaint was filed. I think that was in connection with the election of 64. Karachi incident था कोई. उसके complainant ने फाइल की कि जनाब मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा. तो गौहर अयूब ने भी कर दी, दोनों ने कर दी. That case was transferred. मर्डर केस था. ये मर्डर केस था, कंप्लेंट थी अभी. वो that matter went to the High Court, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कंप्लेंट केस वाला था उसकी पिटीशन खारिज कर दी और दूसरी उन्होंने कहा कि ठीक है ये अभी कॉग्निजेंस, उसने इंक्वायरी नहीं की थी उसमें. वो जजमेंट हम दे रहे हैं जनाब, वो खुद देख लीजिएगा. रिपोर्टेड है? अनरिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टेड है जी. साइटेशन दे दें. बताइए जी, मुझे दे दो. 1968 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, ये कराची है ना, 16775 और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या गई? 1675 सर. 1675. वेरी राइट सर. 1675. इसमें क्या था कि यू कैन डू इट? हाँ जी, हाँ जी, इट कैन बी ट्रांसफर. यस, उन्होंने ये बात नहीं कि इस इशू को नहीं डिस्कस किया कि 374. ओके, आप खाली बता रहे हैं ऐसा केस हुआ था. नहीं, ये हुआ और इसमें दोनों पार्टी ने कहा, मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड करके कहा मैजिस्ट्रेट. इसमें कंफर्मेशन की बात का क्या हुआ? कौन सी कंफर्म? वो फैसला ही नहीं दिया, अभी तो ट्रांसफर हुआ केस. ठीक है, उस ट्रायल की वो तो फिर वापस हो गया. ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया. PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज 496. सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेन 1965 कैसे? 68 का तो हाई कोर्ट का केस है. सर वो 65 में फरवरी. अब आप क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट लेट हुआ. ये रिपोर्ट लेट हुआ. रिपोर्ट PLD कब की? PLD है सर 1965. ये रिपोर्ट लेट हो गया. वापस भेज दिया. वो वापस भेज दिया. पेज सुप्रीम कोर्ट पेज 496. ये रीजंस क्या दी थी मलिक साहब वापस भेजने की? सर वो रीजन इसका मैडम ये है कि उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अभी तक उस पर कुछ किया ही नहीं है, अभी तो इंक्वायरी नहीं की, तो कैसे ट्रांसफर होगा? प्रेसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं. और दूसरा केस ट्रायल की और कोई कुछ नहीं. एक और है जी. वो है केस, वो जो साबिक गवर्नर थे अमीर मोहम्मद खान, उनका केस भी ट्रांसफर हुआ था हाई कोर्ट में, मगर वो भी दोनों की रिक्वेस्ट पे हुआ था, कंप्लेनेंट भी और दूसरा भी. उसका ट्रायल हुआ नहीं हुआ ये कुछ नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने अपने तौर पर भी हाई कोर्ट से पता करने की कोशिश की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें. बट वो वरी हो गया मेरा, मगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. ट्रायल हाई कोर्ट में हुई थी, हियरिंग दी केस, और वो उसमें बरी हो गया. असद Malik Asad was the accused. He was the son. That is not a reported judgment. इसलिए हमें नहीं मिली. I don't think it was reported. It was not. But it was. This question was not considered. No. Self defense was taken. अब वो भी जजमेंट लिख लीजिए. पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल कौन सी यार क्या करती हो? पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1969 पेज 1058.
1058 لاہور کا کیس ہے جی. یہ امیر ملک یہی والا نہیں ملک کیا نام نے بتایا ملک اسد یہ والا کیس ہے اسد کا جی. یہ بچے چوہدری صاحب فرما رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہی فرما رہے ہیں. مجھے بھی ایسا بتایا گیا کہ وہ بری ہو گیا مگر میرے پاس ججمنٹ نہیں تھی تو اس لیے میں نے نہیں بتائی بات کیونکہ میں نے کہا کہ پھر وہ ڈیفیکلٹی ہے. بٹ اس میں بھی دونوں نے کہا کہ ٹرانسفر کر دیں. اور یہ جو پوائنٹ میں نے آج ریز کیا 374 کا دس ہیز ناٹ بین کنسیڈر ان اینی ججمنٹ. وہ اگر اکٹھے لوگ ہی تو ویسے ہی نہیں وہ ہو گیا نا جی. نہیں پہلے بھی دونوں نے کہا نا جی دونوں کیسوں میں this jurisdiction should we expound on this or not in this case no not at all not a touch even. آپ دیکھ رہے ہیں میں کہتے ہیں پڑھ دیتا ہوں. نہیں ہم آپ جو jurisdiction استعمال کر رہے ہیں advisory should we expound on section 526 read with 374 or should we not? I say you must. Sir, you are here to do complete justice. Not with the people, but history as well. Or something, which has not been considered by any court before. نہیں یہ ریز کہاں سے کنسیڈر ہوتا جب آپ نوٹس ہی نہیں کر رہے. Is this a good time to break now? میں تیار ہوں جی جب ابھی کر لیں. نہیں میرا مطلب کہ آپ کا کوئی سیکوینس نہیں توڑنا چاہتے ہیں. سب یہ ہو گیا جی یہ ٹرانسفر کی حد تک میں آئی تھنک آئی ایم کلیئر. 374 کو بھی آپ نے میٹ کر لیا کہ وہ نہیں ہو سکتا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ سیشن ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل مرڈر کیس جو ہے اس کو ٹرائل پہ نہیں نہیں میرا یہ ہر کیس جس میں ڈیتھ سینٹینس ہے. Yes. And the second, the interpretation I will adopt of my very good interpretation. Very good interpretation. I must appreciate. Finally. Thank you, sir. Thank you. آدھا گھنٹے میں ٹھیک ہے. از دیٹ گڈ؟ آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے جی. از دیٹ گڈ انف فار یو؟ اور 2:30 بجے انشاءاللہ 2:30 پہ. تھینک یو. Thank you. Thank you, sir. Thank you. آدھا گھنٹے میں ٹھیک ہے. از دیٹ گڈ؟ آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے جی. از دیٹ گڈ انف فار یو؟ اور 2:30 بجے انشاءاللہ 2:30